now an exclusive by NDTV, escalating the face-off with the centre at a time when Chief Minister Hemant Soren has skipped 7 summons by the Enforcement Directorate. The Jharkhand government has issued a confidential memo, instructions to all departments to not answer any queries by central agencies or hand over any documents to them directly. The departments instead have been asked to report all the queries to the Cabinet Secretariat or the Vigilance Department for processing, while the Jharkhand government has said that it is streamlining the process to ensure incomplete information is not handed over. Experts, however, are seeing the move as a form of non-cooperation with central agencies like the Enforcement Directorate, CBI and Income Tax Department. Remember, the opposition leaders have claimed that the centre is using all these agencies to target them. Well, first, let's find out more about this memo, this diktat that has been issued. It's a confidential memo. It was accessed by NDTV's Mukesh Sengar. Mukesh, if you could first, tell us about this memo that has been circulated, and it's been asked that एजेंसीज जो अप्रोच करेंगी वेरियस डिपार्टमेंट्स को उनको जवाब नहीं देना है, इंस्टेड एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होगा। देखिए, झारखंड में जो ईडी है वो कई बड़े मामलों की जांच कर रही है, जिसमें माइनिंग स्कैम है, डिफेंस लैंड स्कैम है, इसके अलावा मनरेगा स्कैम है। और ईडी अब तक झारखंड के 2 आईएएस अफसरों को गिरफ्तार कर चुकी है। झारखंड के जो सीएम हैं वो खुद डिफेंस लैंड स्कैम में फंसे हुए हैं, उनको 7 बार ईडी सम्मान कर चुकी है, उसके बाद वो पूछताछ के लिए नहीं आई। तो इसी बीच झारखंड सरकार ने जो सीएम की प्रधान सचिव हैं बन्ना दोरेल, उन्होंने एक जो लेटर है वो जारी किया है, और लेटर झारखंड में जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको जारी किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि अगर सेंट्रल की जांच एजेंसियां उनको अप्रोच करती हैं और कोई भी जानकारी मांगती हैं या किसी को पेश होने के लिए कहती हैं तो कोई भी पेश नहीं होगा, और ना ही कोई जानकारी सीधे तौर पर यानी डायरेक्टली उनसे शेयर नहीं करेगा। अगर कोई जानकारी मांगी जाती है तो पहले जो अधिकारी है वो अपने डिपार्टमेंट के हेड को बताएगा, और फिर डिपार्टमेंट का हेड सरकार को अप्रोच करेगा, और फिर सरकार तय करेगी कि आखिर इसमें क्या जवाब देना है या जवाब नहीं देना है। अब इसको लेकर जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनमें काफ़ी बहस हो रही है कि क्या इससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिले नहीं होगी, क्या सबूत नहीं मिटेंगे, और जो सेंट्रल एजेंसी का अधिकार है क्या वो अधिकार नहीं छिन रहा है। हालांकि कुछ लीगल एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अफसरों को कोई भी डायरेक्शन जारी कर सकती है, लेकिन जो ईडी के सोर्सेज हैं हमारे और जो लीगल एक्सपर्ट हैं उनके मुताबिक ऐसे डायरेक्शन से जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, वो हैम्पर होगी और इसमें काफ़ी बाधा आएगी, क्योंकि जब तक जवाब आएगा, जब तक किसी को सम्मन जारी किया जाएगा वो टाइम से नहीं पहुंचेगा, तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो डिले होगी। तो इसको लेकर अब काफ़ी सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या झारखंड सरकार सेंट्रल एजेंसियों से बच रही है, क्या वो जो तमाम जानकारियां हैं वो छुपाना चाहती है, और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर सेंट्रल एजेंसीज और झारखंड सरकार के बीच तनाव देखने को मिलेगा। जी। All right, Mukesh, stay on with us. We're also now joined by Supriyo Bhattacharya, General Secretary, JMM, Rakhi Rathore, BJP spokesperson, and Ashutosh Srivastav, advocate of the Supreme Court. Supriyo Bhattacharya, first to you, what would you say that this is a form of non-cooperation with central agencies? You're in a sense delaying the matter and stopping them from doing their jobs. नहीं, पहले मैं आपको बता दूं, ये कोई डिले का मामला नहीं है। आप देख लेंगे कि कोरोना के बाद से लगातार इस सरकार मतलब तोड़ने की, गिराने की एक लंबी साजिश चल रही। पहले तो वो पॉलिटिकल मूव हुआ, जब वो पॉलिटिकल मूव डिफ्यूज हो गया तब आपका ये सेंट्रल एजेंसी आग घुस गया। आप देखिए, ईडी जिस मामले पर आई थी वो मामला आपका मनरेगा घोटाला का था। वो मनरेगा घोटाला जो अर्जुन मुंडा जी के समय में हुआ था, उस पर विगत जो सरकार थी, रघुवर सरकार, उन्होंने उस मामले का पटाक्षेप कर दिया था, उस मामले को क्लीन चिट दे दिया था। फिर लेकिन चूंकि वो एफआईआर रह गया था, उस एफआईआर को उन्होंने उठाकर यहाँ पर घुसने का काम किया। ठीक है, आप किसी चीज का भी जांच कीजिए, मैं जांच से हम लोग भागने वाले नहीं हैं, लेकिन आप जांच के नाम पर जिस प्रकार से सरकार को, गवर्नेंस को डिस्टर्ब कर रहे, डिरेल कर रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो आप सरकार से पूछिए ना, आपको सेटिस्फाइड ये आपको आंसर मिल जाएगा। आपने कहा कि 7 बार हेमंत जी को समन हुआ है। हेमंत जी को जब पहला समन हुआ था तो उस वक्त उन्होंने उनके पास जाने का काम किया,
और जाकर उनसे पूछा कि आपको मेरे से क्या जानकारी चाहिए। मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर भी हूं, मैं यहाँ का सिटीजन भी हूं, मैं यहाँ का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी हूं, और हमने इलेक्शन कमीशन को और इनकम टैक्स को अपना पूरा ब्यौरा देकर रखा है, और उसके अलावा यदि आपके पास कुछ क्वेरीज हैं right. तो आप हमको लिख के दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और हमने तो आपको ये भी कहा कि आप इन बातों के इसमें मत रहिए, आप चुन चुन कर, ये खाली मेरे स्टेट का मामला नहीं है, ये आप देखिए कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे वो तमिलनाडु में हो, दिल्ली में हो, चाहे वो बंगाल में हो, बिहार में हो, तो आप इसको क्या कहेंगे कि आपको यदि टारगेट किलिंग करना है तो अलग बात है, टारगेट किलिंग नहीं है। Let me get Rakhi Rathore in on this. This allegation, it's not just by Jharkhand. This has been made by, the West Bengal Chief Minister, the Delhi Chief Minister, various other opposition leaders, that central agencies are being used to target them. And now, as Mr. Bhattacharya there just said, he says, just let us do our job. If we come and we give you the information, instead, old cases, old files are reopened and opposition members targeted. Look, Gargi, what Supriyoji has said कि जांच से भाग नहीं रहे. If you have skipped 7 summons of ED, then what else we can expect that what else we can say that आप जांच से भाग रहे हैं? In which condition you are asking? In which question you are summoning? Please don't interrupt, Gargi. Please make it a point that I can make my point. All right, Supriyoji, just a moment. इनको जवाब देने दीजिए. जी. जांच से भाग रहे हैं, that clearly shows because you don't want to answer the summons of ED. In fact, the investigation officer has also asked Chief Minister that I can come as per your convenience, as per your time for the record of the statements, but he's not cooperating. And he's a head of a state. And what you are supposed to, what we are expecting from head of a state is that he should cooperate with the whole procedure. If you have not done anything wrong, I think during investigation you will come clear. There is no problem in that. But instead of doing that, they are playing a victim card. This is, it is a common pattern everywhere in each and every states, because they don't want to cooperate with the central agencies. They don't want to take part in the investigation process. If you have not done anything wrong, I think you should come forward and, make everyone understand. Otherwise, the people, they will have that kind of feeling that, yes, there is something fishy, and that is why you are skipping everything. In fact, the Chief Minister has also filed petitions in Jharkhand High Court and Supreme Court for seeking protection from ED's action. But in both the courts, all right, we'll also come to the point that, very often when leaders who have cases join the BJP, those cases are dropped. That's also an issue we've seen with, Suvendu Adhikari, Hemant Biswa Sarma, Ajit Pawar. But Mukesh, over to you. देखिए, मेरा सवाल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्पोक्सपर्सन हैं उनसे ये है कि 7 सम्मन होने के बाद भी आखिर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद इस तरह का ऑर्डर निकालना, इसका क्या मतलब है? देखिए, आप समन आप इश्यू कर रहे हैं, लेकिन समन किस विषय में इश्यू कर रहे हैं ये भी तो आप हमको बताएं। वो तो लिखा होता है समन में, किस विषय में, किस केस में बुला रहे हैं, वही तो कोई स्पेसिफिक बात ही नहीं है उसमें। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं किस हैसियत से जाऊंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जाऊंगा, मैं राज्य का मुख्यमंत्री के तौर पर जाऊंगा, या मैं इस राज्य का एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि या सिटीजन के तौर पर जाऊंगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा। और आप देखें, आप अपने साथ में अभी बता रही थी कि ये जो भाजपा वाले लोग, इनके घर में जिनका प्रॉपर्टी अटैच कर देता है आपका ईडी, उनको ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लेते हैं। तो आप बोल दीजिए कि हम आपको, मेरे पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपके पास नहीं आऊंगा, तब फिर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन ये कौन सा तरीका कि मैं आपसे नीतिगत तौर पर मैं आपका विरोधी हूं, आप जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, हमारे राज्य के साथ जिस प्रकार का सौतेला व्यवहार हो रहा है, हमारा जीएसटी का पैसा बाकी है, हमारा जो कोल का पैसा बाकी है, आप उनको देंगे नहीं, और आपसे जब मांगेंगे आप हमको डराएंगे। तो ऐसा नहीं चलता है। ये संघर्ष किया हुआ राज्य है, ये कोई खैरात में मिला हुआ राज्य नहीं है। We'll just get Rakhi Rathorji's reply to that, but first Ashutosh Srivastava has been waiting very patiently. Your comments on this, on this, confidential memo that Mukesh has, found, in which there and these directions that have been now given in Jharkhand.
See, first of all, as per Section 50 of Prevention of Money Laundering Act, Enforcement Directorate has got powers to summon, to ask questions, and to have the seizure of the documents. Now, this entire issue was already heard before the Supreme Court. We know in 2022 when it was decided, and the Supreme Court confirmed the powers given to the Enforcement Directorate by the provisions of the PMLA Act, and it upheld all those powers and said that yes, ED has all these powers. So these issues have already been decided. So there is no question about the powers bestowed upon ED. Now, if somebody says that I do not have any prima facie case, but still I have been summoned, that person has the right to approach the appropriate court. And the court, if it finds that there is no prima facie case, and if the provisions and the conditions as mentioned in Section 45 of PMLA is satisfied, can also be granted anticipatory bail, or maybe he can go for quashing under Section 482 of CRPC before the High Court. But in this case, as we know that the petitions have already been filed before the High Court and the Supreme Court, and the courts did not grant any sort of Jharkhand relief. Chief Minister Hemant Soren, even Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, they've been asking, what are you calling us for? In what capacity are you calling us? Let's go back. Quick response, Rakhi Rathore, to this allegation of what is known by the opposition party of the BJP, washing machine, that any leader who joins those cases mysteriously seem to disappear. None of the case has been dropped yet. In fact, I don't agree with the fact that any case has been dropped. If anyone has done something wrong, he has to face the consequences. But it's in the cold storage, it seems. Proper vision of, this is a very clear vision of Pradhan Mantri ji, na khaunga, na khane dunga. But you have done something wrong. In fact, what advocates was telling right now, Supreme Court has rejected their application. They wanted to get a protection against the action of ED, and they filed a petition for that, but Supreme Court said no. So that is a proper base why ED is taking action on this, and you are supposed to take action. You can set an example for other state, the people of the state, that you are cooperating. If you are not cooperating, that clearly shows that something is wrong. You have done something wrong, and that is why you are hiding. And that is why the kind of orders they have issued, that clearly shows that there is some wrong done, because you want to hide the information. I just want to ask my all right, JJM, well, we can't. We are completely out of time. Yes, one quick answer from you, Supriyo ji. नहीं, आप हमको बताइए ना, ये हमारे विद्वान वकील साहब बताए, जब गुजरात सरकार ने जो उनके एनर्जी डिपार्टमेंट का पैसा, इंडोनेशिया से कोयला आया, पैसा भेजा दुबई को, वो फिर से यहाँ पर आ गया. All right, now we don't have time to discuss this whole other case right now. I'm going to have to leave it there. Thank you so much for joining us. Thank you, Mukesh, as well, for joining us here in the studio to talk about this exclusive, this Jharkhand's diktat against central agencies.